Dear students, in this module, we shall discuss the neurotransmitters involved in slow and indirect transmission. There are two classes of such neurotransmitters. The first class includes the biogenic amines, and the second class includes neuropeptides. First, we shall discuss the biogenic amines. Biogenic amines act indirectly through second messenger pathways and produce slow synaptic responses. They include catecholamines, that is, epinephrine and norepinephrine, and dopamine. They also include serotonin and histamine. We shall discuss the role of norepinephrine and epinephrine in detail. The neurons which release these hormones or neurotransmitters are called adrenergic neurons. Norepinephrine is the primary excitatory neurotransmitter in postganglionic cells of sympathetic nervous system, while epinephrine is excitatory at some synapses and inhibitory at others depending on the characteristics of postsynaptic membrane. Both these neurotransmitters are also released by the chromaffin tissue of vertebrate adrenal medulla. Both these neurotransmitters are structurally very similar, having difference only on one methyl group. They also have similar pharmacological characteristics. Dear students, the norepinephrine is synthesized from amino acid phenylalanine. Dear students, एक न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हो जाता है तो उसके बाद उसको उसके फंक्शन को स्टॉप करने के लिए उसकी इनएक्टिवेशन भी जरूरी होती है. Norepinephrine is inactivated through two ways. In the first method, it is taken up by the cytoplasm of the presynaptic cell, यानी जिस सेल ने उसे रिलीज किया है वो इसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पर इस नॉरएपिनेफ्रिन को रीपैकेज कर लिया जाता है और फिर दोबारा जब जरूरत हो रिलीज कर दिया जाता है. दूसरा तरीका, प्री सिनेप्टिक सेल जब टेकअप कर लेता है नॉरएपिनेफ्रिन को तो इसके बाद एक एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसे ब्रेक कर देता है. इन अनदर मेथड जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन की मिथाइलेशन कर दी जाती है और इस तरह से इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है. Dear students, there are certain psychoactive drugs which resemble in structure to the biogenic amines and also act at the same synapses at which these neurotransmitters bind. ऐसी ड्रग्स को हम एनालॉग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेस्कालाइन एक बायोजेनिक अमाइन का एनालॉग है. दैट इज अ ड्रग दैट इंड्यूसेस hallucinations. It interferes with the norepinephrine at synapses in the central nervous system. Another biogenic amine analog is amphetamine. It is very potent central nervous system stimulant. It mimics norepinephrine and it interacts with the adrenergic neurotransmission.
Another biogenic amine analog is cocaine. It interferes with the inactivation of norepinephrine. जब norepinephrine inactivate नहीं होती तो ऐसे में इसका असर continuously रहता है और नतीजा ये कि ये न्यूरोट्रांसमिशन मुसलसल जारी रहती है. Now we shall discuss the neuropeptides, the second group involved in slow and indirect neurotransmission. There are about 40 or more neuropeptides involved in neurotransmission. They are synthesized and released in vertebrate central nervous system. Some neuropeptides are also produced outside the central nervous system by non-neural tissues. For example, intestinal endocrine cells भी कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स भी न्यूरोपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं. इनमें से बहुत सारे न्यूरोपेप्टाइड्स ऐसे भी हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं. न्यूरोपेप्टाइड्स की कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे. Many hypothalamic and pituitary gland hormones are neuropeptides. Similarly, gastrointestinal hormones, glucagon, insulin, gastrin, and cholecystokinin are also peptides. Similarly, substance P and endorphins and enkephalins are also examples. The neuropeptides are released in three ways: as a neurotransmitter, as a neurosecretory substance, and as a hormone. एक पेप्टाइड जब एक न्यूरॉन इसे सिक्रीट करता है और ये दूसरे न्यूरॉन्स पर ही एक्ट करता है तो दिस इज नोन एज इट्स रोल एज न्यूरोट्रांसमीटर. लेकिन जब एक इसी तरह का न्यूरोपेप्टाइड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज कर दिया जाता है लेकिन जाके दूसरे न्यूरॉन्स को ही इफेक्ट करता है तो सच ए सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूरोसिक्रीटरी. जबकि अगर एंडोक्राइन टिश्यूज या एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करते हैं और जाके ये सब्सटेंस नॉन न्यूरल टिश्यूज को अफेक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड ए पेप्टाइड हार्मोन. Neuropeptides are more potent neurotransmitters than small neurotransmitters. This is due to the reason that they bind in very low concentrations. They are active at 10 raised to power 9 molar as compared to 10 raised to power minus 5 molar of other substances. The second reason is that they act through second messenger pathways that provide amplification. So, a small amount can produce large effect. The third reason of their effectiveness is that their actions are terminated very slowly. So, they remain available for long time to the receptors.